Hello students, our today's topic is set up payment method for each country region for payment transaction. In this activity, you specify which payment method are to be used for payment transaction in which country or region. For that, we can go by transaction code FBZP or by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Accounts Receivable and Accounts Payable, Business Transaction, Outgoing Payment, Automatic Outgoing Payment, Payment Method or Bank Selection for Payment Program, and Set up Payment Method for each country or region for payment transaction. SAP में जाके सेट करते हैं. SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Accounts Receivable, Business Transaction, Outgoing Payments, Automatic Outgoing Payment, Payment Method, and set up payment method for each country. Then click on position, enter your country, GB. देन देखो यहाँ पर हमारे कितने 4 पेमेंट मेथड शो किए हैं. फर्स्ट इज चेक, अनदर वन इज डायरेक्ट डेबिटिंग, थर्ड वन इज बैक्स ट्रांसफर एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल क्लियरिंग. तो हम जाते हैं सबसे पहले चेक में, डबल क्लिक करते हैं. चेक हम यूज करने वाले हैं इनकमिंग पेमेंट के लिए. देन क्लिक फॉर इनकमिंग पेमेंट, सेलेक्ट डेबिट मेमो, allow for personal payments. We will use document type that is ZP payment posting, and for clearing ZV, that is payment clearing. Okay, then click on use classical payment, and here program also our set. Now click on save button, click on create request, enter your description, set up payment, methods for set up payment methods per country for payment transaction. Then click on save button and then click on continue button. Now come back and double click on BACS transfer. ये हम यूज करेंगे आउटगोइंग पेमेंट के लिए. विथ क्लिक ऑन बैंक ट्रांसफर, अलाउ ओके, ZP and ZV document type. Then we will use here use payment medium वर्कबेंच दैट इज GB BACS. तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन. तो ये होगी हमारी पेमेंट मेथड.